Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Now today onward we will see AFO Target 2018 most important questions on different subjects. So daily we will cover one subject. So we are today starting with Agriculture Economics. So आज से हम Agriculture Economics पे कुछ 20 स्लाइड्स देखेंगे, उन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First question is national markets are found for. So the right answer is durable goods. So जो national markets होते हैं वो durable goods के लिए ही होते हैं, क्योंकि जो national means कि हमारा जो full all country का products होंगे वो एक place पे एक collect किए जाते हैं, उनको distribute किया जाता है. So पूरे national wide में collect करने में time लगता है, तो इसलिए वही goods का जो marketing होती है जो durable होते हैं, जो perishable नहीं होते, जो खराब नहीं होते हैं. Next is regional markets are found for. The right answer for this is food grains. तो जो regional markets होते हैं वो food grains के होते हैं, क्योंकि जो different regions है उनमें different food grains पैदा होते हैं. So they collect their food grains from their regions and they distribute all over the country or all over the world. So जैसा भी उनकी requirement है, but वो एक regionally होते हैं. जैसे say we can say हरियाणा पंजाब में या यूपी के वेस्टर्न पार्ट में गेहूं ज्यादा आती है, व्हीट इज ग्रोन, सो देयर रीजनल मार्केट्स आर देयर, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इस तरह जो साउथ में या मिडिल इंडिया में जो भी होता है उसको बाकी कंट्रीज के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट पीरियड मार्केट्स आर फाउंड फॉर. जो शॉर्ट पीरियड के मार्केट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी गुड्स के लिए होते हैं. द राइट आंसर इज फॉर पेरिशेबल गुड्स. सो मीन्स की जो गुड्स पेरिश हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, विच गुड्स स्टार्ट डिग्रेडिंग सून, सो उनके लिए हम पेरिशेबल जो गुड्स होती है उनके लिए शॉर्ट पीरियड मार्केट्स रखे जाते हैं. नेक्स्ट, विच मार्केट इज परमानेंट मार्केट इन नेचर. सो परमानेंट नेचर में कौन से मार्केट्स होते हैं. तो राइट आंसर इज सेक्युलर मार्केट्स. जो सेक्युलर मार्केट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर चलाए जाते हैं. नेक्स्ट इज food grains markets, vegetable markets and wool markets are the examples of. So जो different तरह के markets हैं किस चीज के examples हैं. So the right answer is this question is specialized market. So specialized means जो food grains के लिए होंगे those are called food grains. vegetables के लिए perishable होते हैं, means कि they are specified for some goods. जो wool के लिए, क्योंकि जहाँ पर wool markets होंगे वहां पर vegetables market नहीं होंगे, so they are called specialized markets. Next question, a market in which there are more than two but still a few sellers of a commodity is termed as. So जिसमें कि बहुत ही कम sellers होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस मार्केट को क्या बोलते हैं. So the right answer is oligopoly. So oligopoly जिसमें sellers जो एक या बहुत कम होते हैं. इस तरह से जो मोनोपोली को हम देखते हैं, so मोनोपोली मीन्स हमारी जो सेलर्स है वो एक ही सेलर होगा, तो इसको हम मार्केट मोनोपोली भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन फार्मर ऑपरेट्स इन मार्केट व्हेन परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन. सो द राइट आंसर इज मोनोपोली. सो इंडियन फार्मर्स ऑपरेट इन मोनोपोली मार्केट व्हेन परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इरिगेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ ही गिनी चुनी कंपनी जो है वो ही प्रोड्यूस करती है, तो ये मोनोपोली हो गया. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एड्स यूटिलिटी. तो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या ऐड कर देता है. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लेस. इट एड्स ए प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एड्स यूटिलिटी. द राइट आंसर इज पोजेशन. सो पोजेशन को ये ऐड कर देता है. नेक्स्ट, इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी. सो द राइट आंसर इज पैकेजिंग. वो पैकिंग इज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी. तो जिस भी एग्रीकल्चर कमोडिटी को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले जो पैकेजिंग ही की जाती है. नेक्स्ट इज हु टेक्स द टाइटल ऑफ प्रोडक्ट विद ए व्यू टू मार्केट ए प्रॉफिट, मेकिंग ए प्रॉफिट. द राइट आंसर इज स्पेकुलेटिव मिडिलमैन. सो जो स्पेकुलेटिव मिडिलमैन को हम वो बोलते हैं जो कि बीच का प्रोडक्ट प्रॉफिट जो गेन करता है. Next question is FCI was established in the year. तो FCI कब establish की गई. So the right answer is 1965.
Next question, a market in which there are more than two but still a few buyers of a commodity is termed as. The right answer is A, oligopoly market. Next question, regulated market committee consisting of how many members? The right answer is 17 members. Next question, GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, and WTO, World Trade Organization, established in which year? The right answer is 1947 and 1995. Earlier it was called GATT, but now it is changed as WTO. Next question, the Warehousing Corporation Act came into operation on. The right answer is 18th of March 1962. Next question, commercial banks advance up to % of the value of the produce stored in a warehouse. The right answer is 75%. तो जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं जो 75% जो टोटल वैल्यू है उस प्रोडक्ट की उतना वो उसको एडवांस मीन्स उसको लोन दे सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलरली occurring upswings and downswings in prices are termed as functions in prices. The right answer is cyclic. Next question, arise due to changes in government policies, programs, changes in the taxes and tariffs. The right answer is institutional risk. So institutional risks arise due to change in government policies, programs, change in the taxes and tariffs. Next question, Central Agmark Lab is located at. Right answer is Nagpur. Next question, the Agricultural Produce Grading and Marketing Act was passed in the year of. The right answer is 1937. So the present Agmark stands cover quality guidelines for 222 different commodities spanning a variety of pulses, cereals, essential oil, vegetables, fruit, vegetables, and semi-perishable products like vermicelli. Next question, the Prevention of Food Adulteration Act was passed in the year of. The right answer is 1954. Next question, Vegetable Oil Products Standard of Quality Order was passed in the year. The right answer is 1975. So replaced by a single order called Vegetable Oil Product Regulation Order in 1998 for proper regulation of manufacture, distribution and sale of vegetable oil product. Next question, the area of operation of society is restricted to one village is called. Right answer is PAX. That is, there was 92,996 primary agriculture credit associate, that is PACS, as on March 31st 2014 at a grassroots level. Next question, the statutory minimum price is announced for. The right answer is sugarcane. The pricing of sugarcane is governed by the statutory provisions of Sugarcane Control Order 1966 issued under the Essential Commodities Act ECA 1955 prior to 2009 and 10 sugar season. Next question, the marketed surplus is to the marketable plus surplus for perishable commodities. The right answer is equal, means the marketed surplus is equal to the marketable surplus for perishable commodities. Next question, WTO came in the effect from. The right answer is January 1995 under the Marrakesh Agreement signed by 123 nations on April 15, 1994, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade GATT, which commenced in 1948. Next question, risk arise due to change in the government policies are termed as. The right answer for this question is institutional risk. Next question, International Organization for Standards ISO came into existence on. The right answer is 23rd of February 1947. Next question, the Codex Eliminations Commission CAC was established in. The right answer is 1963. In intergovernmental body with over 180 members within the framework of Joint Food Standards Program established
by the Food and Agriculture Organizations of United States FAO and the World Health Organization WHO with the purpose of protecting the health of consumers and ensuring fair practices in the food trade. Next question. Dash is not a function of marketing. The right answer is harvesting. Means harvesting is not a function of marketing. Next question. Dash is considered as market lifeblood. The right answer is market information. Means market information is considered as market lifeblood. Next question. What is the support price for agricultural commodity? The right answer is the minimum price at which the government is prepared to buy it. For all rabi crops of 2017-18 season to be marketed in 2018-19 on October 24-17, to incentives cultivation of pulses and oilseeds in country, government has announced bonus of 150 rupees per quintal for gram and 100 rupees per quintal for masoor, that is called lentil, rapeseed or mustard and sunflower. Next question. Which one of the following is a competitive market? The right answer is perfect market. So perfect market is called a competitive market. Next question. A regulated market ensures. The right answer is fair price. Next question. The Agriculture Price Commission was set up in which year? The right answer is 1965. Now Commission for Agriculture Cost and Price, that is called CACP since 1985. Next question. Codex Elimination Commission established on. The right answer is 1963. Is a body that was established in early November 1961 by the Food and Agriculture Organization of United Nations FAO, was joined by World Health Organization in June 1962 and held the first session in Rome in October 1963. Next question. The Fruit Products Order 1956 order lays down mandatory standards for. The right answer is processed fruits. The Indian Seed Act was passed in which year? The right answer is 1966. Under the Act, seed rule was framed and notified in 1968 and systematic seed act, certification started in 1969. Next question. NAFED was established in which year? The right answer is October 1958. And NAFED stands for National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, is an apex organization of marketing cooperatives of agriculture produce in India. So friends, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर देखे. आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए. आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट advancedagriclasses.com पर जाकर हमारी दी गई टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया. और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 8888236316 पर. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.